Hello everyone, welcome back to our channel Food Tech Online. So today will be our third class on GATE-Lifescience Microbiology subject. So before starting there's an important notification. अगर आपने अभी तक हमारे फूड टेक ऑनलाइन ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप का बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप कोई भी फूड रिलेटेड एग्जाम्स जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर, गेट, एक्सीएक्सएल या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या कोई भी अदर रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें वेरियस सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड केमिस्ट्री। अब फूड केमिस्ट्री के डिफरेंट सब टॉपिक्स लाइक लिपिड्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इस सब टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो आप इसे अपने प्रिपरेशन के दौरान इसे प्रैक्टिस करिए, अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कीजिए। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चनर सीरीज। सो स्टार्ट करने से पहले एक और बात, प्लीज ट्राई टू पॉज द वीडियो. First, try to solve the questions by your own, and at the end, please do not forget to comment down your scores out of 25. So, let us begin. Question number 1. Electron microscopes gives magnification up to option A 100 times, option B 2000 times, option C 50,000 times, and option D 2 lakh times. So, electron microscope actually that attains extremely high resolutions. तो इनके जो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन, हाई पावर के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इन लोग क्या यूज करते हैं, इन लोग इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द लाइट इल्यूमिनेशन फॉर द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 lakh times. That is option number D. Next question. Source of light in fluorescence microscope is from option A mercury lamp, option B sunlight, option C both A and B, option D all of these above. Sorry, none of these. So the most common light source means for the fluorescence microscope, so it's chosen for its high brightness. So fluorescence microscope के लिए हम लोग technically as luminescence या as radiance एक हाई ब्राइटनेस की लाइट यूज करते हैं. दैट इज द इन द अल्ट्रावायलेट और इन द विजिबल स्पेक्ट्रम इट इज इजीली विजिबल. Okay, so in this the mercury arc lamp is mainly used as a source of light in the fluorescence microscope. So my correct option will be option number A, that is mercury lamp. Question number 3. If a person can be infected by direct contact with infected tissue of another person, it is termed as option A indirect contact transmission, option B attachment, option C direct contact transmission, and option D none of the above. So a person to person means a direct contact is there, so option number C, that is the correct answer. So in direct contact transmission, actually what happens, it is spread by a direct contact with the infected persons. So it can be through the mucus or the body fluids or through the skin touches. Whereas in indirect contact transmission, क्या होता है कि when a pathogen from the infected person who can withstand the environmental condition outside before entering the host organisms for a long time before infecting another organisms. That means indirect contamination में एक पैथोजन जो बहुत समय तक बाहर एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करता है एंड एट थ्रू एनी चांस वो पैथोजन देन एक नॉर्मल इन द पर्सन के बॉडी पे जाकर उसे इन्फेक्ट करता है. सो दिस इज थ्रू एन इनडायरेक्ट कंटामिनेशन. So my correct answer will be option number C, that is direct contact transmission. Next. First Pasteur conducted fermentation experiments in option A milk, option B food material, option C fruit juices, and option D both A and C. So Louis Pasteur ने discover किया था fermentation and he discovered it in the year 1857. So in it he demonstrated that the lactic acid corrosion is caused by microorganisms. That means and by the time of 18
1860 उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इसे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, इट इज ड्यू टू द पास्चराइजेशन मेथड. सो लुइस पास्चर ने फर्स्ट पास्चराइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था फ्रूट जूसेस के ऊपर. So my correct answer will be option number C, that is fruit juices. Next. Question number 5. Modern concepts of chemotherapy was proposed by option A, Paul Ehrlich, B, Joseph Lister, C, Elie Metchnikoff, and D, none of these. So modern concepts of chemotherapy. So it was option A is correct answer. पॉल एलरिच को हम लोग एज ए नोबेल लॉरेट्स भी समझते हैं एज अ फादर ऑफ केमोथेरेपी. सो पॉल एलरिच को हम लोग एज अ फादर ऑफ केमोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं. whereas जोसेफ लिस्टर, we know him as a father of modern surgery, and Elie Metchnikoff, he is known as the father of the natural immunity. So my correct answer will be option number A, that is Paul Ehrlich. Question number 6. The rule of phagocytosis was discovered by option A, Paul Ehrlich, option B, Joseph Lister, option C, L. Metchnikoff, option D, Pasteur. So what actually phagocytosis mean? Phagocytosis actually is the cell word, actually it matches the cell eating, means it is the process by which the cell engulfs a particles and it digests it. So this was first discovered by L. Metchnikoff, and we know, just we have read that Paul Ehrlich, he is known as the father for chemotherapy, Joseph Lister as a father of surgery, and Louis Pasteur as a father for microbiology, fermentation. He even discovered various vaccines. So my correct option is option number C, that is L. Metchnikoff. So question number 7. Alforms are discovered by option A, Leinberger, option B, Louis Pasteur, option C, Robert Koch, option D, Antony van Leeuwenhoek. So these Alform bacteria were first isolated in 1935, and this was discovered by Amy Leinberger, and she was a Nobel Prize winner for her discovery. So my correct answer will be option number A, that is Leinberger. Next question. Question 8. The causative microorganisms of Rocky Mountain spotted fever was first described by option A, Howard Ricketts, option D, Da Rocha Lima, option C, both A and B, option D, Robert Koch. So this Rocky Mountain spotted fever, ये एक सीरियस इलनेस पाई गई थी जो एक टिक बाइट से होती थी. If a tick bites a person, तो उसे वेरियस सिम्टम्स लाइक हेडेक होने लगता था, नहीं तो अदर सिम्टम्स लाइक हाई फीवर, रैशेस इन द बॉडीज फॉर विद इन 3 to 4 days. Even nowadays we know this Rocky Mountain spotted fever by the name black measles too. So ये डिस्क्राइब किए थे रॉबर्ट रिकेट्स ने. So the bacteria which causes this was the Rickettsia rickettsii. So इसे हॉवर्ड रिकेट्स के, तो ये बैक्टीरिया हॉवर्ड रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, दैट इज Rickettsia rickettsii. Next. So my correct answer is option number A, Howard's rickets. Next, question number 9. The term bacteriophage was coined by option A, De Helre, option B, F.W. Twart, option C, Bejernik, option D, Jansky. So the term bacteriophage, that is the phage, it was termed by De Helre. It was termed in the year 1918. So my correct answer will be option number A, that is De Helre. Next. Number 10. Viral infection of bacteria was discovered by option A,
de Helre, option B, Frederick William Twart, option C, Bejernik, option D, Jansky. So phage was actually discovered by de Helre, and now William Frederick, what he discovered in the field of cultivating bacteria. He was the co-founder for this viral infectious bacteria. So he even discovered various fighting infectious diseases, mutations, course viruses, and bacteriophages. So my correct answer will be Frederick William Tward. That is option number B. Next, mycorrhiza was first observed in option A, Funk, option B, Frank, option C, Fisher, option C D, Craig. So mycorrhiza ये फर्स्ट कहाँ ऑब्जर्व की गई थी, किसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था? एक्चुअली ये माइक्रोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है बिटवीन अ फंगस एंड अ plant. So this was first observed by Frank. That is AB, Frank. Option number B is my correct. Number 12. Compound microscope was discovered by. So compound microscope was discovered by, okay, हम पहले options देख लेते हैं. So Antony van Leeuwenhoek, option B, Pasteur, option D, Janssen and Hans, option D, none of the above. So compound microscope, it was first discovered by Janssen and Hans. Actually Hans and Janssen क्या थे? दोनों Dutch scientists थे and they were the father and sons. So उन्होंने in late 16th century ये discover किया था, मीन्स उन्होंने एक ट्यूब में at the top and at the bottom उन्होंने ग्लास लगी थी, लेंसेज एक्चुअली, एंड एट द बॉटम और उन्होंने उसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को देखा था, ऑब्जर्व किया था. सो उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को एक मैग्नीफाइड वर्जन्स में देखा. सो थ्रू दिस दे डिस्कवर्ड द डिस्कवरी फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. लेटर क्या हुआ, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने इसे लेटर और फर्दर स्टडी किया और इसे और इम्प्रूव किया. So first this was discovered by the Dutch scientists Hans and Janssen. So option number C is my correct option. Next, question number 13. Phagocytic theory was proposed by option A, Louis Pasteur, option B, L. Mechnikov, option C, Behring, option D, Vida. सो जस्ट हमने 2 स्लाइड्स पहले ही देखा कि फैगोसाइटिक थ्योरी was that this phagocytosis, it was discovered by L. Mechnikov. So phagocytic theory, this was proposed by L. Mechnikov. So phagocytes क्या होते हैं? They are actually cells, specialized cells that can ingest and destroy the bacteria. So my correct option will be option number B, that is L. Mechnikov. So Behring क्या थे? एमिल वॉन बेहरिंग, वो अपने सेरम थेरेपी के बारे में वो एक साइंटिस्ट जो अपने सेरम थेरेपी के लिए जाने जाते थे. इवन उन्होंने एक वैक्सीन का भी आविष्कार किया था, दैट वाज अगेंस्ट द डिप्थेरिया डिजीज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 14. Primary mediators in anaphylaxis. Option A, histamine, option B, serotonin, option C, heparin, option D, all of these. So the chemical mediators, they mainly includes histamines, tryptase, then carboxypeptidase, protoglycans. So these mediators, so that is option number A, that is histamine. Next, question number 15. Electron microscope was discovered by. So just now we read compound microscope was discovered by Hans and Janssen. Now here electron microscope. So electron microscope, it was discovered by Knoll and Roxa. So ये एक फिजिस्ट थे एंड एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे.
जो क्रिएट किए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1931. Okay, so my correct answer will be option number C, that is Noll Ruska. Whereas प्रोफेसर फ्रिट्ज कौन थे, जिन्होंने एटॉमिक माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कवरी किए थे. सो नेक्स्ट question number 16. If the vectors transmit the infection mechanically, they are called option A biological vectors, option B mechanical vectors, option C biological reservoirs, option D both A and C. So the vectors who transmit diseases by transporting the causative agents from contaminated materials. So your contaminated materials, this can be feces, on their feet or on the mouth parts. So they spread the pathogens or the parasites on the human food or in their drinks or in the feces or in through their eyes. उन लोग ये transmit करते हैं. So my correct option will be option number B, that is mechanical vectors. Whereas biological vectors जो होते हैं, for example mosquito या ticks, if bite करते हैं एक इन्फेक्शियस पर्सन को, उन लोग अपनी बॉडी में पैथोजेंस को मल्टीप्लाई करते हैं एंड विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर देयर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो डिलीवर कर देते हैं एक न्यू होस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक न्यू होस्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. सो दोज आर बायोलॉजिकल वेक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17. Reduction of virulence is known as option A exaltation, option B attenuation, C both A, B, D none. So reduction in virulence, it is known as attenuation, whereas enhancement in the virulence, it is known as exaltation. So my correct option will be option number B, that is attenuation. Next. The lethal dose required to kill 50% of the lab animals tested under standard condition. So this is known as lethal dose 50. That is the dose which is required to kill 50% of the lab animals who are tested under the standard conditions. Whereas MLDs क्या होते हैं? MLDs are the minimum lethal doses in which the minimum number of bacteria who causes the disease in the animal under standard conditions. So my option will be option number B, that is LD50. Question number 19. The ability of a pathogen to spread in this host tissue after establishing the infection is known as. So ability pathogen का जो spread करता है host की tissues after establishing the infection, so this is known as invasiveness. That is option number B. Next, question 20. Which is the following enzyme which acts as a spreading factor? Option A hyaluronidase, option B coagulase, option C catalase, and option D DNase. So the enzyme which acts as a spreading factor, that is hyaluronidase, option number A. So this hyaluronidase are the enzymes जो catalyze करते हैं and break down करते हैं hyaluronic acid को in the body, which increases the permeability of the tissues in the fluids. So it's the spreading factor. Next, question number 21. E. coli was first isolated by option A Louis Pasteur, option B Escherichia, option C Shiga, option D Robert Koch. So this E. coli was first isolated by option number B, that is Escherichia. So this microorganism was first described by Theodore Escherichia, and इनके नाम से ही ये Escherichia बैक्टीरिया का नाम आया था. So we know that this E. coli, it's a harmless bacteria which colonize in the intestines of the human and the animals as a normal flora. So my option will be option number B, that is Escherichia. Next, Mycobacterium tuberculosis was first discovered by
Option A, Robert Koch. Option B, Edward Jenner. Option C, Louis Pasteur. Option D, none of these. So Mycobacterium tuberculosis. So रॉबर्ट कोच ने अनाउंस किया था द डिस्कवरी फॉर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस. सो ये बैक्टीरिया कॉज करता है ट्यूबरक्यूलोसिस. सो माय करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रॉबर्ट कोच. इवन एडवर्ड जेनर, उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया था. लुइस पास्चर ने वेरियस वैक्सीन्स, पास्चराइजेशन मेथड्स, माइक्रोबियल फर्मेंटेशंस को डिस्कवर किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Streptococcus pneumoniae was isolated by option A, Robert Koch. Option B, Edward Jenner. Option C, Antony van Leeuwenhoek. Option D, Louis Pasteur. So Streptococcus pneumoniae, so this was isolated by Louis Pasteur. That is option number D. So Streptococcus pneumoniae एक्चुअली क्या है? एक एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है. बैक्टीरिया है जो कॉज करती है न्यूमोकॉकस, which was first isolated and was discovered by Louis Pasteur in 1981 from the saliva of the patient who got the disease rabies. The correct answer is Louis Pasteur. Next, question number 24. Staphylococcus aureus was isolated by option A, Rosenbach. Option B, Louis Pasteur. Option C, Passett. Option D, Sir Alexander Ogston. So Staphylococcus aureus, it was discovered by a Scottish scientist. Even he was a surgeon. तो ये सर अलेक्जेंडर ऑक्सटन, इन्होंने डिस्कवर किया था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वाइल हिज सर्जरी. उन्होंने एक पस के अंदर एक आइसोलेट किया था इस बैक्टीरिया को, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन late 1880s, and even he also said that this bacteria is an aerobic gram positive bacteria. So my correct answer is option number D, that is Sir Alexander Ogston. Question number 25. Pseudomonas aeruginosa was first named by Scrotter and Gassard. Option B, Robert Koch. Option C, Louis Pasteur. Option D, Edward Jenner. So आप सभी इसका सही आंसर नीचे कमेंट डाउन कीजिएगा. So okay, thank you everyone, and please do not forget to comment down your scores out of 25. And any other questions or doubts you have, उसे भी आप कमेंट डाउन कीजिएगा नीचे. आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. इवन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वेरियस अदर सोशल मीडियाज़ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो टिल देन, थैंक यू.